We are doing chapter number 4. Write the name of the chapter in the chat box. Which chapter is going on? What is the name of that chapter? Yes, very good. The name of the chapter is Matter and its States. Now write down the name of the 3 states of matter. Yes, 3 states of matter are which are common on Earth. These are solid, liquid, and gas. Very good, Girisha. And Manraj, all are quick to answer, but all of you should participate. Okay, सभी बच्चे लिखेंगे chat में. And can you name another form of state? Fourth, very good, plasma. It's not common on Earth, but we find it in the ionosphere layer of the Earth. Very good. So all these 3 states, solid, liquid, and gas. Uh, Now today we are doing the dissolving solid, liquid and gases in water. We will do some activities to see if solids, liquids or gases dissolve in water, what do we call them if they dissolve in water, okay? And we will come to know which solids, liquids and gases dissolve in water and which do not dissolve. A few substances, a few solids, liquids I'll try, and then after that you will do after the class, you will do at home and you can send me the videos also. Okay, beta? So first of all, we are going to take water. Okay, I've taken water because water is the universal solvent. Solvent आपको पता है? Solvent means substance which dissolve uh, any other substance in it. Okay. What is solvent? It is the substance in which we can dissolve another substance. वो substance जिसमें बाकी substances घुल जाते हैं उसको हम कहते हैं solvent. जो अपने में किसी दूसरे सब्सटेंस को घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, वो सॉल्वेंट होता है. और जो चीज इसमें हम घोलने जा रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? राइट इन द चैट बॉक्स. Yes, what do we like? I'm going to dissolve sugar in it. So sugar is the solute. Very good. Water is solvent, sugar is solute. Okay, now I will come to know whether it dissolves or not. I have to put it in water, then I will dissolve it with the help of a spoon. And आप वाले नहीं है जी दूसरी हो ये ऐसे शुरू होने लगी है. Anurit, मीटिंग mute yourself, beta. Yes, beta. After a few minutes, we will check if sugar dissolves in water. What is sugar? Solute, a substance which dissolves in water. And what is water? It is a substance in which we dissolve the solute. जिसमें हम solute को घोल रहे हैं, वो क्या है? Solvent. And solute plus solvent, it will give rise to solution. ये मेरा क्या बना दिया? Sweet sugar solution. I mixed sugar in water and we got the sugar solution. Clear? So solute is the substance which dissolved and solvent is the substance in which we dissolve the solute, जिसमें हम solute को घोलते हैं. So solute plus solution क्या है? It is the mixture in which we mix solute in the solvent. Clear? So now some of the substances they dissolve in water and some of the substances they don't dissolve in water. Now sugar dissolves in water, जो पानी में घुल जाती है. Now we will try the salt. Now again I have to take a glass. Okay, we have to put water in it. इसमें पानी घोलेंगे and then we have to take the salt. Okay, now I'll take 1 spoon of salt. This is salt
When I dissolve it in water, so you will see it will easily dissolve in water. ये पानी में dissolve हो जाता है. When you make the lemon water, okay, जब आप lemon mixture बनाते हो आप, when you dissolve lemon and lemon juice plus salt plus sugar to make the lemon water, then you see that कि salt easily dissolves in water. Salt जो है पानी में easily घुल जाता है. Clear? So what do we call the substances which dissolve in water? Yes, Japneet, but unmute yourself. Japneet. Japneet. हाँ जी बेटा बोलिए, what do we call the substances which dissolve in water? Solid substances which dissolve in water, what do we call them? Beta, immediately you have to unmute yourself. Manraj, what do we call? Soluble. We call? Soluble. What do we call them? Soluble. Okay, good. Yes, we call substances which dissolve in water, we call them soluble, like sugar and salt. They get dissolved in water. जो सॉलिड चीजें पानी में घुल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं soluble, और जो नहीं घुलती, which cannot dissolve in water, what do we call them? Yes, what do we call the substances which do not dissolve in water? But I have seen only a few students raise hand. Baki sab, you don't raise hand. If I name you, then you don't unmute yourself. Yes, Japji, but unmute yourself. What do we call the substances which do not get dissolved in water? जो पानी में Ma'am, insoluble. Insoluble. Very good. We call them insoluble. Can you name a few insoluble substances? Yes. Insoluble substances के आप नेम ले सकते हो जो पानी में नहीं घुलते, सॉलिड होते हैं. Very good. Ma'am, what sand? Sand. Very good. Okay. Now I am having sand in this paper. Clear? तो इसमें जो जब मैं सैंड को घोलूंगी पानी में, यू विल सी इट विल नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर. ओके, इट विल, चाहे मैं इसको मिक्स कर लूं, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी इट विल फॉर्म द लोअर लेयर. इट विल फॉर्म द लोअर लेयर. क्लियर? ये लोअर लेयर बना लेती है और ये पानी में नहीं घुलती. यू कैन सी इट at the bottom of the water. This activity you can do at home. Okay, आपने sand को पानी में घोल के देखना. You will find out कि it does not dissolve in water. ये पानी में नहीं घुलती. Okay बेटा? So sand is insoluble in water. We can test some other things also. Like you have to take water. Like आपने water लिया. Then you can try with some other substances also. आपने किचन में से बहुत सारे substances आप try कर सकते हो, whether they dissolve or not. I'm going to put rice. Okay, so rice will dissolve? No. Rice are also insoluble in water. You can try some pieces of stones, you can try mud, you can try some pulses also. So they will not dissolve in water. They are insoluble in water. Okay, screen is not visible. Yes, yes. Yes, you can. Yes, you can pin my video, beta, my screen if you are not able to see it. So, yes. So after that, we can try some other objects also. Like, if we are talking about, अभी तो हमने solids की बात की है. If we are talking about liquids,
So some of the liquids they dissolve in water and some of the liquids they do not dissolve in water. Okay, I'm going to try first of all, I'll try the oil. I'm going to try the mustard oil. Yes, if I put mustard oil in water, so it will not dissolve in water like this. Clear? If I try, so after some time you will see that it will not dissolve in water and it will form the upper layer. It will form the upper layer. Ma'am, because ma'am oil is lighter than water. Very good, because it is lighter than water. It does not dissolve in water. So what do we call it? What do we call the substances, liquid substances which do not dissolve in water? उन्हें हम क्या कहते हैं? जो लिक्विड पानी में नहीं घुलते, जैसे जो सॉलिड पानी में नहीं घुलते उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल. वेरी गुड रेंज. Yes, we call them immiscible. Clear? लिक्विड के लिए हमने टर्म यूज करनी है immiscible. 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 You can see it page 42 of your book. But some of the substances, सभी ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, बेबी ऑयल, ओके, जो भी आप ऑयल यूज करते हो, रिफाइंड ऑयल, all are they are immiscible. They do not dissolve in water. They make the upper layer. Clear? And to be cooking oil, all are not soluble in water. We call them immiscible. Okay? And after that, we can try some of the liquids that dissolve in water. Can you give an example? Like, yes, juice, very good. Milk. Okay, I am having milk. If I put it in water, so it will easily dissolve in water. We cannot differentiate कि इसमें पानी कहाँ पे है और इसमें milk कहाँ पे है. Lemonade also, very good. Juice also. Yes, all these are जो भी substances हैं, liquid substances हैं, if they dissolve in water, what do we call them? We call them miscible. Okay, what do we call them? Miscible. If they do not dissolve, immiscible. If they dissolve, miscible. Okay, I'll give. Meaning of dissolve. Yes. Ma'am, what is the meaning of dissolve? Dissolve means mixed. Okay, mix हो जाते हैं. हम we cannot differentiate between the two कि इसमें कौन सा water है, कौन सा milk है, दोनों एक दूसरे में mix हो जाते हैं. Beta, I'll give chance to you. In between, you will not disturb. Okay, I'll take your queries at the last. Ma'am. Yes. After that, Water. wait, Peter. Yes. After that, gases in water. Some of the gases dissolve in water and some of the gases do not dissolve. Like carbon dioxide is mixed in the soft drinks. Okay, if I shake the bottle, so you will see bubbles of gas. आप खोलते हो ना सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, तो उसमें से क्या निकलती है? गैस. Which gas is this? Write it in the chat box. Carbon dioxide. Kanika, good answer. Yes, carbon dioxide, it is dissolved in cold drinks. Clear? Because it is likely soluble in water. प्रेशर पे ये मिक्स हो जाती है. जब हम इसको ओपन करेंगे, प्रेशर लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट. ओके, ऑक्सीजन भी हो जाती है. yes, oxygen भी dissolve होती है. So that oxygen is dissolved by the aquatic animals to breathe. But some of the gases, they do not dissolve in water. For example, hydrogen and nitrogen. Hydrogen dissolve नहीं होती, nitrogen dissolve नहीं होती, oxygen dissolve होती है. That's why aquatic animals can breathe. And
कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है जो सी में, प्लांट्स हैं दे विल यूज इट टू मेक द फूड, green plants. Okay, so this is all about the dissolving of solid, liquid and gas. You have to do this activity. आपको कुछ भी find out करना है कि whether it is soluble, insoluble, miscible, immiscible, so you have to try it by dissolving in water. Okay beta, hope you will do all these activities. You can send me the pics, you can send me the I have a doubt. Ma'am, I have a doubt. beta wait. बेटा आफ्टर द लेसन मैम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है प्लीज. Yes, now next you have to open the book at page 40. We are going to do the effect of heat, okay, on the state of matter. I'm going to share the screen for that. Yes, beta. 3 states of matter are there. Okay. So now जो अभी हमने किया, in this image you can see we dissolve salt in water, salt solution is formed. So what is solution? Mixture of solute and solvent. Water is solvent, salt is solute. Okay, and after that you can see aquatic animals, they use oxygen dissolved in water to breathe. They have gills, oxygen is dissolved in water, so these animals, they breathe by using the oxygen dissolved in water. Okay, so now next, effect of heat on the speed and distance of molecules. You can see the first picture. इसमें जो molecules हैं, their movement is slightly slower than the others because they are kept at low temperature. आप देख रहे हो 5 डिग्री टेम्परेचर है और उनकी मूवमेंट थोड़ी कम है, बट उनकी स्पेस जो है वो भी कम है. सो सेकेंड पिक्चर में देखो, टेम्परेचर इज 20 डिग्री एंड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर. Molecules are moving at high speed at high temperature and the space of the molecule in between the molecule space is more. जब हाई स्पीड हाई टेम्परेचर होता है तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है और उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट भी इंक्रीज कर जाती है. थर्ड पिक्चर में देखो, डिस्टेंस और बढ़ गई है और स्पीड भी और ज्यादा बढ़ गई है. Why is it so? Okay, and what is the effect of the heat on solid, liquid and gas? Clear? So this we are going to do. कि space between the molecules increases when we increase the temperature and distance भी increase हो जाती है and side by side movement of the particles, movement of the molecules increases with increase in temperature. आपको क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी बढ़ जाती है और उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है. इज इट क्लियर टू ऑल? शो मी योर थम्स अप. क्लियर? स्पीड बढ़ाने से Yes, ma'am. यस स्पेस भी बढ़ जाती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच और उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है. Now, how can we change the state of matter by heating? What happens when water is heated? When water is heated, the molecules of the water, they start vibrating. Vibrating means उनकी जो speed है molecules की वो बढ़ जाएगी, speed बढ़ जाती है और उनकी space भी बढ़ जाती है. Clear? On heating, liquid will change into gas. गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना, तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में. यस, नाउ
अर्शदीप बेटा यू विल रीड 41 पेज पे, यहाँ इवेपोरेशन लिखा हुआ है बुक में, यू हैव टू रीड इट. अनम्यूट योरसेल्फ, रीड दिस पैराग्राफ. On heating a liquid, it changes into a gas. This process is called evaporation. When a liquid like water is heated, its particles start to move faster as heating increases their speed. They move apart from each other and finally they overcome the force between them and escape into the air as a gas. The particles now move randomly in any direction. Yes, very good. Yes, this is what happens when we heat the liquid. When we heat the liquid, what happens? Their molecules of the liquid, okay, their speed increases, the space in between the molecules increases. What is the relation of force of attraction and the space between the molecules? Yes, write it in the chat box. Space और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या रिलेशन है? राइट इट. यस, इफ द स्पेस in between the molecules is more, then the force of attraction will be less. ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. सो जब हम हीट करते हैं वाटर को तो उसकी जो स्पीड बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स में स्पेस बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो they will move apart, molecules will move apart, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे and they will finally overcome the force between them. तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है. ओवरकम मीन्स वो डिफीट हो जाता है, वो उस फोर्स का कंट्रोल ही रहता है एंड molecules are free to move anywhere. So they will automatically change into gas. So when we heat a liquid, it will change into gas because space between the molecules will increase, force of attraction will decrease, they will overcome the force in between them, they will move, they are free to move anywhere. So they will, okay, then they will rise, ऊपर जाएंगे water molecules, clear. Then at high height temperature is less, height पे temperature less होता है. तो at low temperature what will happen? Low temperature पे इसका opposite हो जाएगा. Okay, at low temperature उनकी कूलिंग हो जाएगी, कूल हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड जो है वो लेस हो जाएगी एंड they will come close to one another. पहले गर्म करने पे वो उनकी स्पेस बढ़ गई थी, दूर दूर हो गई थी. कूल करने पे लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स will come close to one another and their speed will decrease and they will convert into a liquid. So this process is called condensation. Clear हो गया आपको? Show me your thumbs up. Yes, ma'am. Okay. ओके, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है व्हेन वी कूल. व्हेन वी हीट तो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, स्पेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है. ठंडा होने पे लिक्विड में, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी. इसको कहते हैं कंडेंसेशन. नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन टू दिस पीस ऑफ आइस? इस आइस क्यूब को क्या हो रहा है? इट्स, write it in the chat box, it is melting. Clear? ये melt हो रही है. On heating, okay, solid changes to liquid. Why is it changing to liquid? Because heat से क्या हो रहा है? उसके molecules apart means दूर हो रहे हैं. Their speed increases, so it will change to liquid. They will overcome the force of attraction between them.
So they will change into liquid. This is called melting. So by heating water, water is changed to steam. The process is called evaporation. When we put water in a freezer at low temperature, it will change to solid. Clear? So we can change the state of matter by heating and by cooling. Clear? ध्यान से सुना करो बेटा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा. Now, next is changes around us. We observe many changes around us. Can you give a few examples? Write it in the chat box. What changes you notice around you? Yes. What changes? Your clothes get dry, your clothes get wet, plants are growing, leaves fall from the trees, okay, drying of clothes, folding of clothes, tearing of paper. So some of the changes we call reversible and some of these changes we call irreversible. Clear? इनमें से कुछ changes reversible होती है, means reversible changes means we can bring these changes to the original form. they can be carried out in reverse direction. हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, पहले जैसा बना सकते हैं. And some are irreversible, means they cannot be carried out in reverse direction. हम उनको पहले जैसा नहीं बना सकते. For example, drying of cloth, कपड़े सूख गए तो पानी डालोगे तो दोबारा गीले हो जाएंगे, तो this is reversible. Okay? 43 पेज पे आप देखो, आपके कुछ एग्जांपल्स और भी दी हुई हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस इज रिवर्सिबल. आइस मेल्ट होगी, दोबारा फ्रीजर में रखोगे तो फिर से आइस बन जाएगी, तो रिवर्सिबल. पहले जैसा जो रिवर्स हो सके, जो पहले जैसी फॉर्म में दोबारा आ सके. एंड इरिवर्सिबल, टीयरिंग ऑफ पेपर. पेपर टीयर करते हो तो आप दोबारा से उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे. If you tear the paper into small pieces, so this is irreversible. Can you give another example of irreversible? Burning of candle. Good. Clear? And some of the changes are physical, means when no new substance is formed. वो change जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती. And some of the changes are chemical, when new substance is formed. कोई चीज हम कुछ मिक्स कर रहे हैं, कोई नई चीज बन रही है तो केमिकल चेंज. अगर उसके सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, चीज वही रहती है तो फिजिकल चेंज. मैटर की स्टेट चेंज हो रही है तो भी फिजिकल चेंज. लाइक आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, कोई नई चीज नहीं बन रही. Can you give tearing of paper physical change? पेपर ही रहेगा. जब आप पेपर को टीयर कर देते हो तो आप पेपर को कुछ और बोलने लगती हो. नो. बट व्हेन यू बर्न द पेपर, जब आप पेपर को बर्न कर देते हो तो क्या होता है? न्यू थिंग इज फॉर्म्ड. ऐश बन जाती हो. ऐश को आप पेपर कहती हो? नो. ऐश इज डिफरेंट थिंग. सम स्टूडेंट्स आर listening very carefully, but some they do not concentrate. Beta, listen carefully. Yes, melting of butter, physical change. बटर को फ्रीजर में रखो, फिर से वो सॉलिड हो जाएगा. ओके. एंड केमिकल चेंज कब होगी? जब हम बटर में उसको तड़का लगा देते हैं और उसमें स्पाइसेस, सब्जियां डाल देते हैं, देन न्यू थिंग इज फॉर्म्ड. देन इट इज अ केमिकल चेंज. क्लियर? Now burning of candle, chemical change, irreversible change. But melting of wax is reversible and physical change. Wax फिर से solid हो जाएगा at low temperature. Clear? Then after that you can see melting of butter. Melting of butter is
physical change as well as reversible. Okay, then milk to curd is chemical change. कर्ड को आप मिल्क नहीं बोलोगे और कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना पाओगे. दिस इज बेकिंग ऑफ केक. केक में क्या यूज होता है? फ्लोर यूज होता है, मैदा यूज होता है, देन हम उसमें ऑयल और बटर और घी डालते हैं, शुगर डालते हैं, ओके, बेकिंग पाउडर डालते हैं. वो सब चीजें मिक्स करके जब हम इसको बेक करते हो तो न्यू थिंग इज फॉर्म्ड. We cannot get back the flour, sugar, milk, butter, जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो चीजें हम वापस नहीं ले पाएंगे. It goes in one direction only. Clear? कोको पाउडर भी मिक्स करते हैं फ्लेवर के अकॉर्डिंग, जो भी हमें वनीला वगैरह जो भी हमें पसंद आता है, we put that in while baking the cake. But after it is baked, we cannot get the things, ingredients back, so it is chemical change and irreversible change. Falling of leaves, irreversible but physical, क्योंकि लीफ तो लीफ ही रहती है, कुछ और नहीं बनती, बट ये इरिवर्सिबल है, दोबारा से हम नहीं पेस्ट कर पाएंगे. मैम Yes, now germination of seed and growing of plant. What kind of change is this? Write it in the chat box. Yes, beta, write it. Which type of change is this? Write करिए. Yes, chemical change. जितनी भी growth के साथ related change है. Very good, Jashandeep. These are chemical changes as well as irreversible also. रिवर्स नहीं कर सकती हो आप. क्लियर? ये नहीं कि एक बार प्लांट बन गया आप उसको बोलो कि दोबारा से सीड बन जाए, वो नहीं आप कर पाओगे. सो जितनी भी ग्रोथ ऑफ नेल्स, ग्रोथ ऑफ योर हेयर, ये सब केमिकल चेंजेस है एंड इरिवर्सिबल ऑल्सो. क्लियर हो गया आपको? सो इरिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज. ओके बेटा. So behavior of matter we will do tomorrow. Now you can ask me if any queries there. जो बच्चे raise hand कर रहे थे, they have some queries, so you can ask me. जी मैम